नमस्कार। आइए आज के मातृ पितृ वंदन समारोह में हम अपने हृदयस्थ भावों को अर्पित करते हैं माता पिता के चरणों में। माँ जो मन को जानती हैं और पिता जो भविष्य को पहचानते हैं, और उन दोनों का हमारे व्यक्तित्व निर्माण में अविस्मरणीय और अतुलनीय योगदान है। तो अपने भाव उन्हें अर्पित करते हुए आइए उन्हें विश्वास दिलाएं कि उनका स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि है और वह स्थान अन्य कोई भी कभी भी ले ही नहीं सकता है। उनके दिए संस्कारों को अपनाए हुए अपने कार्यों से उन्हें गौरवान्वित करते हुए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। Hello everyone, feeling a noble enthusiasm as we Rishikul family are celebrating Matru Pitri Pujan Divas. It's a day to relish the pious relation. It's a day to pay our gratitude to our responsible parents. It's a day to depict our respect, obedience and humility to our loving parents. Though I know very well that a single day is not sufficient. Every day, even I should say every second of our life, we should devote in doing the services which make our parents feel blessed. We should work in a way that our parents feel on cloud nine. Hope this initiative by our institution will make the students understand that showing the gratitude is equally important as feeling in the heart. Congratulate you once again and with my best wishes, thank you. Have a nice day. ये तो सच है कि भगवान है, हम मगर फिर भी अनजान हैं। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। जी हाँ, माता पिता भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल उपहार हैं। माता पिता का स्थान हर जीवन में बहुत ही ऊपर है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। हमारी खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों का, सुखों का त्याग कर देते हैं। तो आइए मातृ पितृ वंदन के इस दिवस पर हम उनके चरणों की वंदना करें और अपना प्यार, सम्मान और स्नेह उनके लिए प्रदर्शित करें, क्योंकि माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। तो माँ बाप का दिल जीत लोगे तो कामयाब हो जाओगे। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियाँ माफ़ करने वाले, सच्चा प्यार देने वाले माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप नहीं मिलते। तो आइए उनके चरणों की वंदना करें, अपना प्यार स्नेह उनके लिए समर्पित करें। धन्यवाद। Yes, good morning everybody. Today on the auspicious occasion of Matra Pitri Vandan, I am here to tell you the importance of parents. Yes, my dear students, parents are the most precious gift of God for us. They play important role in our mental, physical, social, financial and even career development also. They help in every step of our life. Yes, my dear students, they provide us everything that is helpful in our development, like milk, fruits, proper food from time to time for our physical growth. If we will see the field of education, they do all the things to make us educated and well developed, respected in the society. They work hard day and night for their children education, and they feel proud when we get good marks. They feel very much proud when we get good marks. Yes, students, parents' most tough role starts in their children adolescence age. All of you know that this age is
enjoyable for the teenagers, while on the other hand, tensionable for the parents. Teenagers do lots of mistakes in this age. They try to convince their parents every time for their activities. When we did something wrong, they scold us. They support us in difficult time of our life. They try to make balance in our emotional persistence that help to tackle even the tough conditions of the life. They are the real leader in our life. Even when we are confused in our life, they help us what to do, what not to do. They help us in taking the important decision of the life. Yes, they want a happy life for us. So, my dear students, it's very important that we should love them, we should respect their feelings, we should care for their feelings. So, now on this occasion, we all take a pledge that from today we all will take care of our parents in every field, at all the time, and in every circumstances. That's all from my side. Thank you.